Screen is visible to you? Jasmita, just confirm. Shamita, screen is visible to you? Yes, sir. Ellipse start करो. So first of all, in ellipse, we need to know basic about ellipse. First of all, then we can do every question related to the ellipse. Okay, so first of all, general equation of second degree, we know that in a straight line we have studied general equation of second degree. क्या होता है श्री श्री? डू यू नो? अब बताइएगा, मैं इन रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, राइट? सो नाउ everything conic section, circle, parabola and ellipse, hyperbola made by this second degree equation. So for ellipse condition is ellipse होगा, उसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए एंड h स्क्वायर लेस देन ab. It means delta is, do you know a delta? Do you know delta? श्री डेल्टा हमारा होता है, डेल्टा इस जो सेकंड डिग्री है उसका ए बी सी प्लस 2f gh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, राइट? ये हमारा डेल्टा होता है. तो ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम बोल पाएंगे कि वो इलिप्स होगा. एंड आल्सो दिस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एच स्क्वायर लेस देन ए बी. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एच स्क्वायर इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, राइट? एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. सो ए आपको याद रखना है. For ellipse, delta not equal to 0 and h square less than ab. और डेल्टा क्या होता है? a abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. Okay, so now why we need to remember delta not equal to 0 and h square? Because sometimes JEE advanced exams ask locus, and if you get the locus, we need to identify which option is hyperbola, parabola, ellipse, circle. So we need to know these things. Okay, so this is the basic thing. Now definition for ellipse. Now I am talking about definition. An ellipse is the locus of a point which moves in a plane so that the ratio of its distance from a fixed point to the fixed line is constant. क्या होगा? An ellipse is the locus of a point which moves in a plane so that the ratio of its distance from fixed point to the fixed line. तो फिक्स पॉइंट बोलने का मतलब क्या है? फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है, हमें फोकस की मैं बात कर रहा हूँ. एंड फिक्स्ड लाइन का मतलब है डायरेक्ट फिक्स. ओके, डायरेक्ट फिक्स. सो दैट इज, इट मींस कि आपको शॉर्ट में इस ये चीजों को याद रखना है.
PS अपॉन PN इज इक्वल टू E। ये तो मैं पूरे कोनिक सेक्शन में करता आया हूँ। PS अपॉन PN इक्वल टू 1। सो नाउ कंडीशन इज फॉर इलिप्स, इलिप्स के लिए कंडीशन क्या है, PS अपॉन, फॉर इलिप्स के लिए 0 से इसेंट्रिसिटी 1 के बीच होगा। E E E is denoted by इसेंट्रिसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ E से, राइट। सो E का जो वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो इलिप्स होगा, राइट। डू यू नो द इसेंट्रिसिटी, श्रीषा, श्रीषा, डू यू नो अबाउट eccentricity? Yes, sir. Okay, good. So for parabola, eccentricity equal to 1. wow, good, very good. And for hyperbola, for circle, सर्कल के लिए कितना होगा eccentricity? E is equal to 0, right? Yes, sir. Yes. And for parabola equal to 1. And hyperbola E E. greater than 1, right? So, Yes, sir. yes, good. So now PS upon PN is equal to E, that is the eccentricity. So PS upon PN is means मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। This is the P point, that is variable point. Let H, K is the locus, जिसको फाइंड करना होता है उसको हमेशा H, K लेते हैं, H को X से और K को Y से। This is the fixed point, that is let alpha, beta. Now A क्या कहलाएगा, focus. Fixed point is called focus. This is a focus, okay, fixed point. And this is the directrix line, perpendicular. So let इसका इक्वेशन मैं मान लेता हूँ कि लाइन है, उसका इक्वेशन nx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 है। और जो a लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। सो a कहलाएगा फिक्स्ड लाइन and s is the fixed point, that is focus. So it means ps, or this is a let n, so it means ps upon pn is equal to E, और where E is 0 to 1 क्या होगा, लोकस। सो पॉइंट क्या याद रखना है कि फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन कॉल्ड, द फिक्स्ड लाइन is called directrix. So now I am giving question to you, just solve easy question, basic, find, then I will go to the standard form of ellipse. Find the equation of the ellipse whose focus is 1, 0, focus का coordinate 1, the directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is 1 by root 2. कीजिए। शाय ज्वाइन, अदिति आप अभी ज्वाइन किए हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, देख के समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अदिति, शाय, सेम ही चीज है, पैराबोला में जैसे डिस्कस किया था, सेम ही चीज। फॉर इलिप्स के लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर लेस देन ab, ओके।
एंड डेल्टा क्या होता है, ए बी सी प्लस 2f/g/h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। और ये आपको जो पता होगा पी एस अपॉन पी एन। क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। साई आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके गुड। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। PN means Sri Sri. PN it means Srisa. Your pronunciation name is Srisa, right? Shirisha, sir. Srisa, okay. Are you doing? आदित्य आंसर क्या है आपका? Anyone can just say the answer. Sai. सिंपल आपको पी एस अपॉन पी एन इक्वल टू ई करना है, राइट? पी एस अपॉन पी एन इक्वल टू ई। लेट पी पॉइंट मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है। दिस इज द एन परपेंडिकुलर। ये डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये डायरेक्ट्रिक्स का होगा तो दिया हुआ है इक्वेशन। फोकस दिया हुआ है फिक्स पॉइंट दैट इज 1,0। so we need to apply ps upon pn is equal to e, that is e कितना दिया हुआ है 1/√2। so ps is equal to 1/√2 times pn। so now pn क्या लिखेंगे आप? pn is nothing but perpendicular distance from p point to line x plus y, so you can write pn is x plus y plus 1 upon root under 1 square plus 1 square। perpendicular distance निकाल लेता है ना। so now squaring both sides get ps square is equal to 1/2 times pn square, right? so ps is nothing but distance between point p to s, so apply x minus 1 square plus y minus 0 square is equal to 1/2 pn is x plus y plus 1/√2 square, right? simplify this, x square minus 2x plus 1 plus y square is equal to 1/2। इसका स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b प्लस c का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy प्लस y1 y into 1 plus 1 into x। so now if you solve, get x square plus y square minus 6x minus 2y minus 2xy plus 1 equal to 0। डाउट है एनीवन? क्लियर? शमिता आपको क्लियर है? हाँ सर। Now I am discussing with most important point, that is a standard equation of ellipse। आपको जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक सबसे बेसिक जो पॉइंट एलिप्स का, ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए आपको माउथ पे। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जेई मेंस यहीं से आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse।
हम लोग इसको पहले फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम like ellipse is like that, ellipse. Now a क्या अकल आएगा, 0,0. Now this is the AE, comma 0, that is focus, right? अभी मैं इसके बारे में सारी चीजें लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? ए वर्टेक्स होगा -a,0 एंड दिस इज a,0. इलिप्स होगा x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1. यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ऑफ इलिप्स. इलिप्स का x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, standard equation of ellipse. So now I will prove the how it gave the x² by a² plus y² by b² equal to 1. Okay, so now this is the focus, that is a, 0. मैंने पैराबोला में यही कहते थे focus a, 0. so focus को हमेशा a से डिनोट करते हैं, right? So now make the directrix line, that is डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो था वो a by e, that is a by x minus x equal to 0, right? यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो a by e comma 0. This is the point of a by e comma 0 m. So ts to this is the directrix line. This is the directrix line. Now ps upon pn. Similarly, we make the directrix left side. This is the also directrix line. Let m dash. Now this is the minus a comma 0. Also focus. If he is focus, is dash. Two focus here. Plus a comma 0 and minus a comma 0. From center, this is the center point. 0 comma 0 is the center. Right now 0 comma 0 is the center, right? So from center to focus a comma 0 and here to left and right also equal, right? And this is the vertex. This is called vertex, a, let a dash. I will write down about these things. Okay, vertex is a comma 0 and minus a comma 0, right? So this is also called, this is a major axis. Major axis. If a greater than b, then this axis is called major axis and this axis is called minor axis. Condition क्या है? अगर a बड़ा होगा, a greater than b, x² by a² plus y² by b², so जो a line हमारा होगा वो major axis कहलाएगा and this line is minor axis. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, b, right? And here 0, minus b. So now इसका इक्वेशन क्या होगा? x equal to minus a by e. So x plus a by e equal to 0, right? And we know na x is equal to here a by e, right? So x minus a by e equal to 0. This is the directrix line. Two directrix line, right? So now we can write, let this is a ps, right? P point. So now as upon, you know the as upon m क्या होगा? as upon m, that is e, right? Here you can see as a2 vertex a2 focus upon perpendicular to am is e, right? So we can write as as is equal to e times am, right? E times am. Let this is the first equation. Now again we can write this is a dash, right? This is a dash and a dash, or this is a s dash, right? This is a s dash. So we can also write again a dash upon s upon a dash upon a is e, right? Left side we can see similarly a dash upon a dash s upon a dash m is equal to e.
So we can write as a dash S is equal to A times A dash F, right? Then this is a second equation. So if you add first and second, equation, get AS plus A dash S is equal to E times AM plus A dash M, right? A dash M. Now, AS plus A dash is nothing but A dash plus A dash S. AS plus A dash S is nothing but A dash. A dash is equal to E times, you can write AM is CM minus CA. Apply just distance formula, CM plus CA dash. So now 2 times A dash, it means A comma 0 and minus A comma 0. Distance is 2A, right? So 2A is equal to E times CM minus CA is A, right? Plus CM plus CA dash is A, right? So now if you get this cancel out, right? So 2 times A is equal to 2 times ECM, right? So now 2 to cancel out, A is equal to E times CM. So now you can write A by E is equal to CM. A by M is equal to CM. C is center. Center, I am denoting the center. C 0, 0. Center is 0, 0. Right? So CM is equal to A by E. So A by E is nothing but directrix. CM is C to M, center to perpendicular distance directrix, is A by E. So we can write X is equal to A by E. This is the directrix. Got it? This is the directrix. Till now, any doubt? X equal to A by A. So we need to remember X equal to A by A is called directrix. Okay. So this is the directrix line. That is equation is X equal to A by E, and this equation is X equal to minus A by E. Now we need to find the focus coordinate. Okay. So we need to remember, I'm explaining how to get only, but we need to remember only these things. For directrix is X equal to A by E, right? So now if you subtract equation 2 minus 1, get CS plus CA dash minus CA minus CS is equal to E times A dash M minus A. If you simplify CS plus CA dash, it means A, right? Minus A minus CS is equal to E times A dash, right? So now CS plus A minus A plus CS is equal to E times A dash, means 2A. So now S will cancel out. 2 times CS is equal to 2 times EA. 2 cancel out. So CS is equal to AE. CS is equal to AE. CS is nothing but C to S is distance is AE, right? That is AE comma 0 is focus. So AE is, right? So S means focus coordinate. AE comma 0 and S dash minus AE comma 0. This is the focus. So we call foci. Okay. So focus is AE comma 0 and minus AE comma 0. So we need to remember these things. Focus is AE comma 0 and minus AE comma 0. Okay. Now PS upon PN is equal to E, right? So we can write as a PS is equal to E times PN, or we can write as a PS square is equal to E square PN square, squaring both sides. So PS is nothing but, can you answer PS? Let P coordinate is X comma Y, right? So P coordinate is X comma Y. So we can write PS is equal to
श्रीसा, PS क्या होगा? PS is distance between P to S, focus, right? So distance formula apply कर दीजिए. So S minus AE square plus Y minus 0 square, right? Y minus 0 square equal to E square. PN is nothing but perpendicular distance P point to directrix X equal to A by E, right? So you can write A by E minus X square, right? So if you simplify it, you can square X square minus 2AEX plus AE square, A square, E square plus Y square equal to E square upon A minus EX square upon E square, right? E square cancel out. Simplify, get the standard equation. X square plus A square E square minus 2AEX plus Y square equal to A square plus E square X square minus 2AEX, right? Squaring, so 2AX cancel out, right? Now X square plus Y square plus A square E square is equal to A square plus E square X square, right? Now X square 1 minus E square, take out EX square left side, so I'll take the common X square plus Y square is equal to A square minus A square E square, so take the A square common, so get 1 minus E square, right? So now divide both side by 1 minus E square, divides both side by 1 minus E square, right? A square times 1 minus E square से divide कर दीजिए, right? So get X square upon 1 minus E square upon A square 1 minus E square, right? Plus Y square upon A square 1 minus E square is equal to 1, right? Got it? So now this is cancel out. So X square upon A square plus Y square upon A square 1 minus E square is equal to 1, right? So now B square is nothing but A square 1 minus E square, where B square is equal to, we need to make B square is equal to A square 1 minus A square. So now formula is X, standard equation is X square plus Y square by B square equal to 1. So this is the standard equation of ellipse. A standard equation of ellipse. यही आपका ellipse का standard equation होगा, right? And this is the important thing, that is B square equal to A square into 1 minus A square. This is also important. So we need to remember these two things. These two things we need to remember. This is the standard equation, and this is the important point. B square is equal to A square times 1 minus A square. So why you need to remember these things? This is the important for us, because we need to find E, eccentricity. Every question, many times ask the JEE Mains question is find the eccentricity. Okay, so we need to remember these things. B square equal to A square 1 minus A square, where condition क्या है? अभी तक मैंने A greater than B का एक्सप्लेनेशन दिया हूँ. A greater than B, मैं assume कर रहा हूँ कि A greater है B से, right? A is greater than B. Till now, we need to remember these things. Foci is A, 0 minus A, 0, and directrix is x बराबर A by E and x बराबर minus A by E, x equal to minus A by E, and B square. These things we need to remember, okay? And this diagram also we need to remember in the mind. Center is 0, 0, focus is A, 0,
and a vertex is a comma 0 and minus a comma 0, right? So we need to remember, okay, this is called major axis, this is the major axis, and this is the minor axis, okay, when a is greater than b. So now till now, any doubt? If you have any doubt, you can ask. Any doubt? Anyone? No, sir. Okay, good. आदिति, आपको डाउट है? शमिता, Sir. डाउट है? No, sir. Okay. Shai, doubt है? No doubt, sir. Okay, good. So now, very important one, that is term related to an ellipse. Term related to an ellipse. So now, क्या क्या टर्म्स है? ये आपको टर्म्स आपको याद होना चाहिए एवरी टाइम, तो आप इजिली क्वेश्चन कर देंगे. टू एन ellipse. A, that is a comma 0, this is called vertex, and here coordinate is minus a dash, that is minus a comma 0, this is the vertex. This is the major axis. Now this line, this is directrix. Equation is x equal to a by a. Also here, also left side directrix line, that is x equal to minus a by a, right? X equal to minus a by a. This is also directrix line. Now this is the minor axis. Okay. So b coordinate 0 comma b, and here is let b dash, that is 0 comma minus b. Now this is the focus, that is a comma 0, and also focus h dash, let minus a comma 0, fixed point, right? So now I will write everything. This is the latest rectum. Latest rectum is nothing but passes through always from focus. So let L1 dash, right? Also one or more directrix, that is L dash, L and L dash. The latest rectum always passes through focus, right? So if you put the x square by a square equal to y square by b square is equal to 1, x equal to ae, put x equal to ae, so we get y coordinate, right? So ae square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. If you solve, get y is equal to b square plus minus b square by a. b square e को आप जब रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे b स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर से a स्क्वायर इंटू, तो आपको a मिलेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? l का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा b स्क्वायर बाय a, राइट? एंड l डैश का कोऑर्डिनेट a कॉमा माइनस b स्क्वायर बाय a, राइट? एंड हियर माइनस a कॉमा b स्क्वायर बाय a, and here minus a comma minus b square by a. So latest rectum, and center is, this is the center 0 comma 0, coordinate is 0 comma 0. Okay, center coordinate is 0 comma 0. Everything is clear to you? If you have doubt, you can ask. मैं zoom कर रहा हूँ a greater than b, then I will discuss b also greater than a, but first of all we need to know a greater than b term. So now ellipse
x square upon a square plus y square by b square equal to 1 when a greater than b, where b square equal to a square times 1 minus e square. So now first point is term related to center. Center coordinate is 0, 0. Second thing is length of major axis. साई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना बताइएगा? दैट इज a, a dash. A dash कितना होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? दैट इज 2a, राइट? 2a. श्रीसा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज बेसिकली y एक्सिस. b dash is equal to say 2y. 2b. B coordinate is 0, b. Okay, so 2b. Always write b coordinate is 0. If you put this is the y axis, basically minor axis is nothing but y coordinate, y axis, and major axis is nothing but x axis, right? So if you put the x equal to 0, get y equal to b and plus minus b. So b coordinate is 0, b, and b dash is 0, minus b. Similarly, if you put the y is equal to 0, get a coordinate a, 0 and a dash minus a, 0. X equal to a plus minus a. So length of minor axis is 2b and length of major axis 2a, right? Now vertex. Fourth point is vertex. Vertex का coordinate साई बताएंगे. Vertex का coordinate क्या होगा? a, 0 and a dash minus a, 0. This is the vertex. Okay, these points a, 0, and minus a, 0. This is the called vertex. Okay, now foci is s, a, 0 and s dash minus a, 0. This is the foci. These are the foci. So now distance between foci. Distance between foci कितना होगा? 2 times AE. 2 times AE. AE minus A. Distance get the 2AE, right? Distance between foci is 2AE. Now next point is directrix का equation क्या होगा? Directrix, that is x equal to plus minus a by e, right? Right side का x equal to a by e and left side x equal to minus a by e, right? So distance between, now distance between directrix. Distance between directrix is equal to 2a by e, right? 2a by e. A by e and minus a by e coordinate, right? Here is a by e, 0, and here is minus a by e, 0. If you calculate the distance between, this is m, let m dash. M and m dash get 2a by e. So distance between directrix is 2a by e. Now ये सब आपको याद होना चाहिए. Extremities of latus rectum. Latus rectum. So क्या है? आप फाइंड कर सकते हैं ना? x square by a square plus y square by b square equal to 1. Latus rectum always passes through focus. So that is put x equal to a, right? Get a square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So now e square plus y square by b square is equal to 1. So y square is equal to 1 minus e square times b square, right? So now
we can write 1 minus e square. We know that b square is a square is equal to, we know that na a square is equal to b square times 1 minus e square. So we can write as a 1 minus e square is nothing but a square by b square. So put y square is equal to b square into a square upon b square, right? So b square 1 minus e square. So b square is equal to no b square equal to we know that a square times 1 minus e square. So we can write as a 1 minus e square is equal to b square upon a square, right? So b square upon a square. So get y is equal to plus minus b square by a. So this is the extremities क्या हो जाएगा? Extremities, that is L is a comma a by b by e, b by a, b square by a, b square by a, L dash a comma minus b square by a, right? And L1 is nothing but my a upon a minus a b square by a, and L1 dash is minus a minus b square by a. So these four point is extremities of lattice rectum, right? Got it? So now length of lattice rectum. Length of lattice rectum. That is क्या होगा 2b square by a. 2b square by a ना? If you calculate distance LL dash, get 2b square by a, right? So that is the length of lattice rectum. Now next point is length of perpendicular drawn from focus to the directrix. That is SM is equal to A by E minus AE, right? X equal to A by E में put कर दीजिए आप, निकाल दीजिए X equal to A by A, यही है ना डायरेक्ट्रिक्स का. So X minus A by E equal to 0, right? So put the AE comma 0 distance तो आपको पर निकालना था root under 1 square, right? So get AE minus A by E mod. So the length of perpendicular drawn from focus to the directrix is A by E minus AE mod. Up to now, any doubt? Till now, any doubt you can ask. If you have doubt, any doubt you can ask. See, these things are very important. अगर आपको पूरा इलिप्स समझना है तो ये चीज आप अगर समझ जाएंगे तो इलिप्स आपको आसान लगेगा. ये अगर आप डायग्राम इस डायग्राम को अगर आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम को बस आपको a,0 minus a,0 फोकस होता है, सेंटर 0,0 latest rectum that is passes through focus, so coordinate is length L1. ये सब अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर लेंगे इससे. Till now, any doubt? Aditi, Srisa, any doubt? No, sir. No, Could you sir. scroll up, sir? Shai? No doubt, sir. Aditi? No, sir. Shamita? Okay, good. So, can I Sir, give the could you scroll up, sir? I'll take a Okay. screenshot. right? A scroll up or a scroll down? Up, sir. To the right. Yes, sir. Yes. Okay. I will upload notes. I will upload in the resources we can access. Okay. Sir, could you want scroll down?
Yes, sir. So can I give the question? Just try to solve. Now question number 1. Everyone try to solve. Eccentricity the eccentricity of an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, where latest rectum is half of the major axis. जो भी बताया उसी का बस यूज कीजिए। आपको इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू बताना है। तो पैराबोल इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। आपको बस यही दिया गया है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस है। इट मींस कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है जो कि हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आपको इसको यूज करके आपको इसेंट्रिसिटी बताना है। E इक्वल टू करके बताइए एवरीवन। राइट टू द स्क्रॉल अप कर दूंगा। आपको कुछ पॉइंट देखना है। आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम that is 2b square by a and length of major axis that is 2a, and b square equal to a square times 1 minus b square. Anyone get the answer? Anyone? क्या है सिंप्लिसिटी E इक्वल टू कितना है? आदिति 20।
श्रीसा आपका कितना है आंसर? आर यू डूइंग और यू हैव डन? बेसिकली गिवन क्या, 2b² बाई a इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, where latex rectum is half of the major axis. Latex rectum क्या होता है? Length 2b² by a, right? And major axis 2a. So get 2b² is equal to a², right? 2b² equal to a², right? We know that b² is equal to a² times 1 minus e², right? So if you replace a² by 2b², get b² equal to 2 times b², 1 minus e², right? So b² cancel out. 1 by 2 is equal to 1 minus e², or e² is equal to 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. So get e is equal to 1 by root 2. This is the answer for this question. Got it? यही आया था आंसर आदित्य आपका? Yes, sir. आपका श्रीसा? श्रीशा, शमिता, Yes, sir. शमिता, नहीं Are you आया there? sir. I understood what you explained. Okay, good. Now I am giving to the question. Sure. A rod of length 12 centimeter moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. क्वेश्चन पढ़िए, ए रॉड है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, मूव्स विथ इट्स एंड, अपने एंड्स के ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो उसका एंड है वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी का लोकस बताना है ऑन द रोड पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, व्हिच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कांटेक्ट विद द एक्स एक्सिस. ट्राई टू डू. क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? आदित्य, understood the question? Or I need to explain the solution? Please let me know.
Are you trying to solve, everyone? Aditi? Yes, sir. Good. Shamita? Yes, sir. Shrisha, are you doing? Shrisha? No, sir. किससे समझ नहीं आया आपको? I think I need to explain. आपको बोला गया कि रॉड है, उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, वो दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो उसको टच कर रहा है, राइट? इंड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। देखिए ये वाई एक्सिस है, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस। एक रॉड है जिसका इंड ए रॉड मान लिया कि ए बी रॉड है। ए रॉड, मैं जो ब्लैक पेन से बनाया ए रॉड है, लेट बी एंड ए, दोनों ए एंड बी उसका एंड है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। ये जो ए बी का लेंथ है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर, राइट? और बोला गया है ये जो 3 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट है, एक्स एक्सिस से 3 मीटर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, राइट? So let the p कोऑर्डिनेट जिसका मानना होता है उसको h कोमा क्या x कोमा y ले सकते हैं। So let x कोमा y, right? p. So if you make the angle ये 3 सेंटीमीटर, तो pb कितना होगा? 9 सेंटीमीटर, because ab 12 है, 3 सेंटीमीटर। So now we know ना a डिस्टेंस कितना होगा? Here to here this is x, right? And here to here this is y, right? So now जितना एंगल थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा होगा इतना ही थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा होगा, राइट? So now we can write in triangle, let R, in triangle this is the let Q, in triangle BQP cos theta is equal to b by h, that is x upon 9, right? And in triangle PRA, this triangle PRA, we can write sin theta is equal to b by h, that is y upon h. H is 3, right? Got it or doubt? BQ में क्या आप लिखेंगे? PQ upon BP, right? That is BQ is nothing but PQ is nothing but x upon BP is 9, right? And where you can write sin theta is equal to in triangle ARP. ARP में क्या लिखेंगे? sin theta P by H. P is PR, right? And H is PA. That is y upon 3. So you know now sin square theta plus cos square theta is equal to 1, right? So if you apply this formula, so get y square by 9 plus x square by 9 square is equal to 1. It means x square by 81 plus y square by 9 is equal to 1. This is the locus of P, that is ellipse. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको sin थीटा एंड cos थीटा फाइंड करना होता है आपको यूज करके, ताकि आप फिर sin थीटा cos थीटा को आप रिमूव कर पाएंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस आइडेंटिटी यूज करके आप। नाउ एनी डाउट? श्रीषा समझ में आ गया ना? Yes, sir. गुड। शबिता आपको समझ में आ गया?
Yes, sir. अदिति Yes, हो गया था आपसे? हाँ sir. Good. Now I am giving one more question to you just solve. Question is, find the eccentricity of the ellipse if the length of its minor axis is equal to distance between foci. So कीजिए. शीशा, आज के क्लास में समझने में प्रॉब्लम हुआ है क्या? No, sir. शीशा, गुड. इसको कीजिए. ये जब भी आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा जाए ना, तो आपको ए फॉर्मूला यूज करना ही करना है आपको. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. और आपको इसको बी एंड ए में आपको बी और ए को रेशियो करने के लिए आपको दिया हुआ होगा एक रिलेशन. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस. मतलब आप बी या ए को आप रिप्लेस कर सकते हैं टर्म्स. अगर आप बी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बी को आप ए के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं. इसलिए आपको दिया हुआ होता है जब भी आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा जाएगा. जैसे इसमें भी आपको दिया हुआ होगा, लेकिन आपको दिया हुआ है लेटेस्ट वेक्टर इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस. इसेंट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आता है मेनी टाइम्स जेईई मेंस में हमेशा. आपको इस तरह का रिलेशन देख के आपको इसेंट्रिसिटी पूछा जाता है. कितना आया? E is equal to how much? Aditi, length of minor axis क्या होता है? Srisha, can you say? So what's the final answer? 1 by root 2. Got it? Yes, sir. श्रीसा, माइनर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मैंने क्या बताया? 2b, राइट? से यहाँ दिया है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकई. इट मींस कि 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स AE. यही आपको रिलेशन दिया हुआ है, राइट? डिस्टेंस बिटवीन फोकई क्या होता है? 2AE. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2AE. देखिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकई दैट इज 2AE. इस डैश के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकई दैट इज 2AE. So a relation दिया हुआ है, right? So we can write B is equal to A, right? Now apply this formula. So now we need to find A. So get B by A is equal to E, right?
B by A is equal to A. So B square by E is B by A square equal to, we can write 1 minus E square, right? So E square is, आपको ये याद रखिएगा, वो E square जो होता है 1 minus B square by, डायरेक्टली याद रखिएगा E is equal to root under 1 minus B square by A square. जब फिर A is greater than B, मैं अभी तक A greater than B की बात कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा B greater than A. So 1 minus B square by A square is nothing but E square, right? Equal to E, right? So squaring both sides, get E square is equal to 1 minus E square. So 2 times E square is equal to 1. So E square is equal to 1 by 2. So E is equal to 1 by root 2. Got it? This are clear? Yes, sir. Doubt है? No. Okay. So now I am ending the meeting. Okay. Good night. Bye. Thank Bye, you. sir. Bye.